So when it comes to energy changes, the key idea is identifying that there is a system and there are surroundings. System और surroundings में अगर energy interchange होती है, तो that is what happens during a chemical reaction. If the system gives energy to the surrounding, again, overall जो वो करता है उसको बोलते हैं डेल्टा E. अगर surroundings को वो दे, that means system has lost energy, we say it is negative. And if overall surroundings give energy to the system, we say it's endothermic. So हमारा सारा perspective है system का. So the energy changes is always considered with respect to or with the system in mind. Okay, so positive means कि surroundings ने energy supply की है और system ने उसको वापस नहीं दिया, और system अगर surroundings से ज़्यादा supply करे, so that is negative. Now this does not mean that one of the two will happen. Both happen in most of the reactions. Both of these things happen. फर्क सिर्फ इतना है कि सराउंडिंग सिस्टम को इतनी एनर्जी दे और सिस्टम सराउंडिंग को ज्यादा एनर्जी वापस करे, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा. और अगर सराउंडिंग सिस्टम को इतनी एनर्जी दे लेकिन सिस्टम सराउंडिंग को इतनी सी एनर्जी वापस करे, सो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा. एंड दैट इज हाउ वी नो कि ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. नेवर डज इट हैपन कि दोनों एक जितनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज दैट नेवर हैपेंस. ओके, now how do we show this? What we do is we don't show it like this. We usually graph it like this. We say कि ये सिस्टम है और मैं सिर्फ सिस्टम की एनर्जी को देखूंगा. सो मैं कहता हूँ सिस्टम की ओरिजिनल वैल्यू को कोई भी आप वैल्यू देते हैं. आपके एनर्जी के यहां पे ओरिजिनली था सिस्टम. अब सिस्टम एनर्जी यहां से इंक्रीज करता है, ये सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, और फिर एक खास लेवल पे ऑब्वियसली सिस्टम पहुंच जाता है और फिर वहां से वो एनर्जी लूज करता है. लेट्स सपोज वो इस लेवल तक एनर्जी लूज करता है, तो अब सिस्टम यहां पे पहुंच गया. वी से दिस इज वेयर इट स्टार्टेड, सो दिस इज रिएक्टेंट. दिस इज वेयर इट एंडेड, सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन या ट्रांजिएंट स्टेट. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल. टू गेट टू दिस पॉइंट, सिस्टम ने जो एनर्जी ली है ओरिजिनली, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. एंड द डिफरेंस इन एनर्जी ओवरऑल बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच. दिस ऑब्वियसली कम्स इन टू कैटेगरीज, और उसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. ओके, सो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, of course there are two situations possible, so we have two different curves. This is again O level stuff, nothing new here. So हमारे पास सिस्टम यहाँ पे है और सराउंडिंग अगर यहाँ सिस्टम एंड पे यहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है. और दूसरी ऑप्शन क्या है कि शुरू में सिस्टम वही है लेकिन एंड पे सिस्टम यहाँ पे है. नाउ डायरेक्टली नहीं जा सकता, it has to transfer through the transient state. If this is the situation, we call it exothermic, because overall system has lost energy. यहाँ से वो यहाँ पे आ गया. And if this happens, we say that this is endothermic, because overall system has gained energy. System यहाँ पे था और system यहाँ पर आ गया. Now, again, we can label it. This part is delta H. Okay, and this always starts here and ends. So it starts where the system starts, it ends where the system ends. And then we have delta activation energy, which always starts where the system starts and goes where the system has the highest value. So that is your activation energy. Iski definition आनी चाहिए. There is one way to change activation energy, but there is no way to change delta H. Activation energy, so this is endo. Activation energy depends
on mechanism, depends on the pathway. तो अगर आप एक शॉर्टकट देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका डेल्टा एच इस वजह से चेंज हो. डेल्टा एच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथवे, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन इटसेल्फ, कि उसका प्रोडक्ट क्या है और उसका रिएक्टेंट क्या है. सो अगर वो चेंज होंगे, ओनली देन विल डेल्टा एच चेंज, because it has a close connection to the bonding inside the product and reactant. बट एक्टिवेशन एनर्जी का उसकी अपनी बॉन्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं इतना ज्यादा. एक्टिवेशन एनर्जी का ताल्लुक है कि वो बॉन्ड्स को किस तरह से तोड़ती है या बनाती है. सो activation energy can change if you add a catalyst, but delta H cannot. Okay. In both of these diagrams, on the y-axis, you have the energy or enthalpy on the y-axis. And on the x-axis, you have reaction pathway. Okay, so that's on the x-axis, and energy or enthalpy, दोनों में से कुछ भी आपको y-axis पे मिल जाता है. Usually in A levels, we don't put values. We make a more qualitative judgment. But later on, as you study it at higher level, you will see that you will get it for the calculated value. So that was nothing new again. So आप लोग ये बना सकते हैं. Does everybody know how to draw it? Sir, Yes. sir, sorry to cut you. Sir, एक होता है कोई बोल्ट्जमैन कर्व या कुछ इस तरह का नाम होता है. Yes. Sir, वो भी इस एनर्जेटिक्स के अंदर ही है. Usually it is related to energetics, और उसका पूरा नाम है Maxwell Boltzmann curve. We shouldn't forget the contribution of Maxwell. लेकिन उसको हम ज्यादातर देखते हैं collision theory में. So when we talk about collision theory and rates of reaction, मैं उसको आपको बताता हूँ. So can everybody please draw the enthalpy change when I do this reaction? Okay, I've gotten two responses. Both are correct. So the idea is, because it's negative delta H, so this must be this one, exothermic. Now we have a few definitions to do. Before we do that, you have to understand this symbol. This symbol is the symbol for standard reactions. अब standard में हम क्या-क्या situation standardize करते हैं. Standard talks about control variable. Control variable is something that you fix so that you can easily compare any two reactions together, any values together. और उसमें हमारे पास तीन चीजें हम fix करते हैं. Usually, first is temperature. Temperature, we fix it to 298 Kelvin, which is also 25 degrees Celsius. I will not talk about Fahrenheit. We don't really need it at this point. Similarly, we fix pressure because we are dealing with many gases and rate of reaction is affected by pressure. So we fix the pressure to 1 atmospheric, which is 100,000 pascals. Although 1 atmospheric is not exactly 100,000 pascals, वो 101,000 कुछ होता है, but we just take this value. This is the more reliable value. And the amounts, we fix them. We usually say if you have a solution, it will be 1 mole per dm cube. And if you have any solid or gas, then it is 1 mole. And because the temperature is fixed, pressure is fixed, for gases, volume is automatically fixed. So volume is, for this condition, we take the volume to be 24 dm cube. Okay, so automatically wo ho jati. So wherever this symbol comes out to be, that tells you that this reaction happened at standard condition. Okay, so standard conditions. अब अगर मैं आपसे कहूं कि delta H standard क्या होगा, so it will be delta H but with this circle passed through this. Okay, and this delta H of course will tell you what happens at these conditions for a reaction when you take 1 mole of this thing, or agar solution है तो 1 mole per dm cube of that,
at 100,000 pascals and 298 Kelvin, and you do whatever your reaction is. अब हम reaction को identify करने के लिए कुछ enthalpy changes को नाम दे देते हैं कि ये reaction कौन सा है. तो हमारे syllabus में 5 main categories of reactions हैं जिनको हम देखेंगे, but interestingly question उसमें से सिर्फ 2 या 3 के ऊपर आएगा. So the first one that we have is a very interesting one. It is formation. Formation क्या है? Formation is compound from elements. Elements form compound. ये formation है. Formation क्या है? Elements form compounds. तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, सो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन को F लिखूंगा, और अगर स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड का सिंबल लगा दिया. सो व्हाट इज फॉर्मेशन? इट इज एलिमेंट फॉर्मिंग कंपाउंड. स्टैंडर्ड हो गया तो मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड हो गया, 298 केल्विन हो गया, 100,000 पास्कल्स हो गया, एंड दैट्स इट. सो फॉर्मेशन को डिफाइन करूं अगर तो क्या होगा? इट इज व्हेन द डेल्टा H फॉर मेकिंग 1 mole of a substance, although by substance I explicitly mean compound here, from its constituent elements at standard conditions. और standard conditions क्या हैं? 298 Kelvin, 100,000 pascals, and the standard states. यानी वाटर है तो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे भी तो वाटर वेपर एग्जिस्ट कर सकता है, बट वी विल नॉट टेक दैट. वी विल से हमें वाटर लिक्विड चाहिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर में वाटर लिक्विड होता है. अगर हमें कार्बन लेना है तो वो ब्लैक पाउडर होगा, और सॉरी, या वो ग्रेफाइट की बात करें तो वो पाउडर ही होगा, सॉलिड ही होगा. ठीक है. अगर हमें ऑक्सीजन लेनी है तो ऑक्सीजन 25 पे गैस ही होती है, तो हमें O2 गैस ही लेनी होगी. सो दैट इज फॉर्मेशन. सो लेट्स राइट एन इक्वेशन. लेट्स से लेट्स स्टार्ट विद सिंपल स्टफ. मुझे वाटर की फॉर्मेशन चाहिए. सो वाटर कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टिंग टू मेक इट. ओके, अब ये फॉर्मेशन है लेकिन ये बैलेंस नहीं है, और मुझे 1 मोल बनाना है. तो इफ दिस इज फिक्स टू बी 1, तो इसका मतलब ये हाफ है, और कंडीशंस भी बतानी है. सो दिस इज अ गैस एंड दिस इज अ लिक्विड, एंड दैट इज इस रिएक्शन की जो डेल्टा H होगी उसको मैं डेल्टा HF बोल सकता हूं. ओके, कैन यू प्लीज राइट इट फॉर CO2? ये तो इससे भी आसान है. So you start with carbon, which is solid. You add oxygen, which is a gas, and you've done it. It's also a gas. So this is delta HI. Okay, can you do it for K2Cr2O7? The key idea is just take 1 mole of the compound and write the elements और उसको balance करना है. That's it? Yes. Does Cr exist? Does Cr या इसके साथ कुछ और भी होता है? Chromium is a metal, so Cr itself exists करता है. So it should be easy. Potassium is a solid, Cr is a solid, O2 is a gas. And how do we balance it out? I need 2 potassium, I need 2 chromium, and I have 7 here, 2 here. The fraction is 7/2. It's that simple. Just take the number here, divided by the number here. Yes? Is it okay अगर हम decimals में लिख रहे हैं, या फिर is it important to write it in fraction? Decimal, fraction, square roots, all of those are numbers. There is no discrimination here. So you can write any one of them. Okay, so that is delta H formation, और ये solid होगा तो ये हमें solid बताना है. All right. The second one is actually a very fixed reaction. उसको बोलते हैं neutralization. So neutralization is obviously a very special kind of, very common, very important, but a very unique reaction, which is when you take acid and you take an alkali and you react them to make water. The key important idea is that it is acid and alkali reacting to make water. It's not hydrogen and oxygen making water.
So it is H plus from acid reacting with OH minus from alkali, making H2O liquid. So this is aqueous, this is aqueous, this is liquid. And the delta H for this, that's going to be delta H neutralization. So NEUT for neutralization. And if it happens as standard condition, so this. So kya hai? When 1 mole water made from 1 mole acid and 1 mole, बल्कि 1 mole acid की बजाय 1 mole H positive and 1 mole OH minus at room temperature and pressure या standard conditions. ठीक है, standard condition लिखेंगे पूरा word. So ये मेरे पास standard neutralization enthalpy आ जाएगी. ठीक है, so ये यूनिक होती है और इसकी वैल्यू भी बड़ी फिक्स है. रूम टेम्परेचर पे -57 किलो जूल्स पर मोल होती है. और ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात कर रहा हूँ, वीक एसिड से खराब हो जाती है वैल्यू. अच्छा, अगला हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन हो गई, तो अगली है कंबशन. Combustion is when you burn something, but because you're burning it, you take 1 mole of that. You fix the amount, you fix the temperature, you fix the pressure. So when 1 mole, अभी again ये combustion की standard value बता रहा हूँ. When 1 mole of a substance, it's important to say substance here because it can be a liquid, it can it can be an element, it can be a compound. When 1 mole of a substance is burned in excess oxygen, okay, that is enthalpy change of combustion. So for example, अगर carbon की combustion लिखनी है तो carbon plus oxygen makes carbon dioxide. Carbon monoxide नहीं, क्योंकि I have to do excess oxygen. So solid, gas, gas. Interestingly, इसकी value और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखी थी, वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट पर्सपेक्टिव यू हैव. It all comes down to what perspective you have. So if your perspective is with regards to the product, then the same equation represents formation. If your perspective is with regards to carbon, then the same equation will represent combustion. So for example, Could you explain this point again? Sure. अगर मैं आपसे कहता हूं कि write the formation of water, so you know that you're getting 1 mole of water and you're burning H2 in half O2 to get this. Reaction तो वही है, उसकी delta H की वैल्यू भी फिक्स्ड है. बट अगर यही मैं आपसे कहूं कि राइट द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, सो वो भी आप 1 मोल हाइड्रोजन बर्न करके वाटर बना रहे हो, उसकी भी डेल्टा एच सेम है. इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट योर पर्सपेक्टिव इज. आप कह रहे हो कि मुझे वाटर का 1 मोल बनाना है, तो फिर यही इक्वेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताती है. और अगर आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बर्न करना है, यही इक्वेशन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बता रही. So the point is that delta H of this reaction is the same, but this can represent delta HC of hydrogen, or it can represent delta H formation of water. Same thing, 2 perspectives. The value is still the same. Okay? Then there are some smaller values, smaller enthalpy changes. जैसे एक enthalpy change of atomization होती है. सिमिलरली एक इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन होती है. इन दोनों में द पॉइंट इज सिंपल. इनकी डेफिनेशन आपको नहीं आएगी, बट द आइडिया इज कि अगर मैं आपको कहूं एटमाइजेशन करनी है, तो ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करें और 2 ऑक्सीजन एटम्स बना लें. यानी यू टेक 1 मोल ऑफ दिस एंड यू ब्रेक इट डाउन, दैट इज एटमाइजेशन. सिमिलरली हाइड्रेशन क्या है कि आप किसी चीज को डिसॉल्व कर लें. मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, उसमें आप वाटर ऐड करो और मुझे NaCl एक्वस दे दो.
सो ये हाइड्रेशन है. अब इसमें क्या फर्क है? Simply I started with solid which has now been dissolved in water, excess water, to make dilute NaCl. सो ये हाइड्रेशन है. इसकी डेफिनेशन भी नहीं आएगी, एटमाइजेशन की भी डेफिनेशन नहीं आएगी, डेफिनेशन उन तीनों की आएंगी. बट द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू राइट देयर इक्वेशंस. अगर मैं आपसे कहूं कि एटमाइज कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कि आपने कार्बन और 2 ऑक्सीजन को बना देना. नाउ दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा एच फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें तो हम कार्बन और ऑक्सीजन यूज करते थे, यहाँ पे हम उसके भी एटम्स बना रहे हैं. सो एटमाइजेशन एज द नेम सजेस्ट वो ये है. और एएस में दिस इज गुड इनफ. इसके अलावा भी और होती हैं, हर प्रोसेस को आप नया नाम दे सकते हैं, उसकी डेल्टा एच को नाम दे सकते हैं. दिस इज जस्ट लेबलिंग. द पॉइंट इज यू अंडरस्टैंड कि जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनीज करनी है, तो आपके जेहन में फौरन आना चाहिए कि पोटेशियम मैंगनीज और ऑक्सीजन गैस चाहिए मुझे. लेकिन जब मैं आपसे कहूँ कि कंबशन ऑफ एथेनॉल करनी है, तो आपके जेहन में फौरन आना चाहिए कि 1 मोल एथेनॉल को एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं. तो टेक्निकली यही 2 मेन डेफिनेशंस आपको आएंगी, और इन्हीं 2 के रिएक्शंस वो आपसे बनाने का कहेगा इन व्हाट इज हीट साइकिल. ओके, सो विल डू दैट टुमारो. The next step that we have today is calorimetry. Is everybody comfortable with the equations and writing the definitions? If you're not, please tell me. It's important that you are comfortable drawing these equations and writing them. Okay. Calorimetry kya hoti hai? Calorimetry is a practical technique. It is what you use in P3 to measure enthalpy change. So it is a practical technique to measure delta H. How do you do this? Of course, it involves heating. So हमें और cooling भी हो सकती है वैसे तो. So we need to make sure कि हमारे पास अगर solid है तो उसको heat करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. We usually use liquids, and the best choice is of course water or alcohol depending on what kind of substance you're using. अगर water है तो polar compounds will be easily soluble. अगर organic compounds है तो alcohol is a good choice. Sometimes we use other solvents as well, but in A levels we stick to just water. Of course, there's 2 ways. There's endothermic and there's exothermic. Problem क्या है? Problem ये है कि delta H को measure करने का कोई आज तक equipment, कोई machine delta H measure करने वाली invent ही नहीं हो सकी, क्योंकि डेल्टा एच इज प्योर एनर्जी. एनर्जी को हम हमेशा इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं. वी डोंट हैव मेथड्स टू डायरेक्टली कैलकुलेट एनर्जी. एटलीस्ट वी डोंट हैव द इक्विपमेंट टू डू दैट. ओके, वी ऑलवेज टेक वैल्यूज और उन वैल्यूज को कैलकुलेशन के थ्रू हम डेल्टा एच निकालते हैं. सही है. सो दैट्स द की आइडिया. सो एंडोथर्मिक को कैसे मेजर करते हैं? इट इज इन्वॉल्विंग हीट. सो वी यूज अ थर्मोमीटर. So we use a thermometer and the temperature falls in endothermic and temperature rises in exothermic. तो हम सबसे पहली चीज कैलोरीमेट्री में जो मेजर करते हैं वो है थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेंज. अच्छा, अब 2 तरह के कैलोरीमीटर हमारे सिलेबस में हैं. फर्स्ट वन इज यू टेक अ सॉल्यूशन in some liquid and you react it with another solution, और आप उसका टेम्परेचर चेंज मेजर करते हो. दिस इज व्हेन द रिएक्शन इटसेल्फ इज अब्सॉर्बिंग और गिविंग ऑफ हीट. ठीक है. सो दिस इज अ कैलोरीमीटर वेयर यू मेजर द हीट गिवन और अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन. सो द सॉल्यूशन इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ हीट. सो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वो सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, उसमें फिर दूसरा सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, और वी हैव अ थर्मोमीटर हियर. वो थर्मोमीटर से इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू दोनों को मेजर करते हैं. couple of important points to remember here. We do it in a polystyrene cup. Can anybody tell me why we do this? So this is the first stage where the reaction heat content, that is what we are trying to measure.
ठीक है, डायरेक्टली। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें एक लिड भी चाहिए। All of these are making sure to minimize heat loss. That is what you should also be doing. And what values do we use? The values do we, a few assumptions that we make. सबसे पहले हमें मेजर क्या क्या करना है? हमें मेजर करना है टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमें टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू और टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू दोनों चाहिए। तो जब आप एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो आप उसकी इनिशियल टेम्परेचर लेते हो, आप उसका फाइनल टेम्परेचर लेते हो। यानी कि पहले आप उसको थर्मोमीटर को डालोगे, वो एग्जामिनर आपसे कहता है कि यूजुअली 2.5 मिनट्स के लिए वो आपसे कहता है कि इसको मिक्स करो, लेकिन आपने उसमें कोई दूसरा सोल्यूशन ऐड नहीं करना। इनिशियल टेम्परेचर यूजुअली वी मेजर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके बाद हम दूसरा सोल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, फौरन लिड ऐड करते हैं, और फिर हम उसके फाइनल टेम्परेचर मेजर करते हैं। सो ऑफ कोर्स यहां पे एरर इसका भी होगा, एरर इसका भी होगा। सो डेल्टा टी का एरर हमेशा ऐड होता है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है दैट एरर एड्स अप। तो एग्जामिनर पेपर 3 में आपसे ये बातें पूछता है। Similarly, we also need to measure the volume of solutions. And because we have, since concentrations are low and water is solvent, we usually say mass is equal to volume. ये हमारी assumption होती है। जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं हम कहते हैं कि हमने कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत थोड़ी सी ली हुई है और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने लिया है। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हम ये कहते हैं कि देखें अगर मेरे पास 50 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें एसिड तो होगा 0.02 cm क्यूब, तो उसको तो वैसे ही इग्नोर कर दो आप। तो पीछे जो 50 cm क्यूब मेरे पास वाटर सोल्यूशन है, assume it to be just water, because we are assuming the mass is very little, the mass that is coming from the acid or base or whatever solid, whatever solution you have. And the second point that we use is because water has a, pure water has a density of 1 gram per decimeter cube, so gram per centimeter cube. So if you have 50 cm cube of solution, take it to be 50 grams. Kyun? Because it all comes down to how do you measure delta H from thermometer? You use the calorimetry equation, Q equals mc delta T. इसको बोलते हैं Q equals m cat, एटलीस्ट मैं तो ये बोलता हूँ Q equals m cat. This is a direct way of measuring the enthalpy change. Q, the delta T you can measure from thermometer. C we take it to be for pure water, and pure water का C हम लेते हैं 4.18 joules per gram per centimeter cube. Oh, sorry, per gram per, क्या होता है इसका unit? Per Kelvin. And mass is obviously the volume. So because of this assumption, the volume becomes mass. Because of this assumption, assuming that water is 100% pure, the C is given to us. Delta T we measure from thermometer, और हमें directly calorimetry calculations कर लेते हैं हम। मजे की बात ये है कि because delta T is usually measured in degree Celsius, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल, लेकिन जब आप उनको माइनस करते हो ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिग्री सेल्सियस में लिया है या केल्विन में लिया है, बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, बोथ ऑफ देम आर लीनियर स्केल्स एंड दे कॉरेस्पॉन्ड एग्जैक्टली 1 to 1। ठीक है, तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो दैट इज द सेम एज 10 केल्विन का डिफरेंस, सो इस वजह से वी कैन इजीली यूज दैट वैल्यू।
Is everybody clear on how we can do this? And I'm hoping कि आपने लैब में इसको एटलीस्ट एक दो दफा किया ही होगा, स्पेशली न्यूट्रलाइजेशन वाला तो आपने बार बार किया होगा. So this is a reaction heat content. This is an कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट जिसमें आप वो मेजर करते हो, डायरेक्टली मेजर करते हो. ठीक है. ऑफ कोर्स हीट लॉस के ऊपर क्वेश्चन इसमें आते हैं. परसेंटेज मास, परसेंटेज एरर का भी इसमें पॉइंट एक इंपॉर्टेंट होता है, दैट इफ डेल्टा टी इज स्मॉल देन परसेंटेज एरर इज हाई, एंड सेम फॉर इफ वॉल्यूम इज स्मॉल. अगर आप बहुत थोड़ी वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन की तो उसमें डेल्टा जो आपका एरर इन परसेंटेज एरर है वो राइज कर जाता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी यूजुअली यूज लार्ज वॉल्यूम्स लाइक 50 cm क्यूब तो हम करते ही हैं. अगर आप 10 cm क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें परसेंटेज एरर आपका काफी ज्यादा होगा. कंसंट्रेशन का भी तो नहीं आता ना इस तरह के लेस कंसंट्रेशन यूज में. कुछ भी हो सकता है. मतलब एग्जामिनर कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट वेयर दे चेंज एनी फैक्टर, लाइक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेगा और आपसे कहेगा कि बताएं क्या इम्पैक्ट आता है. लेकिन उसमें क्या करेगा कि वो आपको दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन कह देगा और आपको कहेगा कि अब बताओ. बिकॉज रिमेंबर योर रिएक्शन इन्वॉल्व्स मेजरिंग टेम्परेचर. सो आप सिर्फ एक चीज को चेंज करके टेम्परेचर में चेंज को मेजर करोगे. सो आप अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो वो आपसे कह सकते हैं कि डाइल्यूट किया मैंने, अब बताओ टेम्परेचर चेंज पे क्या इफेक्ट आया. ठीक है. तो एक वो हो सकता है. लेकिन डाइल्यूशन से इंथैल्पी को फर्क नहीं पड़ता. सो हो सकता है कि आपके दोनों में वैल्यू सेम ही आए तो, और एग्जामिनर इसी को प्रूव करवाना चाह रहा हो आपसे. सो दिस रिएक्शन इज क्लोज टू द रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट, बट ज्यादा जो चेंजेस वो करवाता है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन में करवाता है. इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. वो कहता है कि जी टेम्परेचर मेजर करो, 2-3 दफा करो, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, और आपकी असम्पशन को वो चैलेंज करता है कि मास और वॉल्यूम को सेम क्यों लिया है. वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम इज 1 cm क्यूब. Does that answer your question? Yes, sir. Another important point in this kind of reaction is कि यहाँ पे heat loss बहुत ज़्यादा होता है. Because even though we use polystyrene cup and even though we use a lead, this is a really lousy method to be honest. क्यों? polystyrene cup की lagging हमने की नहीं, तो heat loss तो फिर भी होना है. और secondly, आपने thermometer use किया है, और thermometer आपने जब add किया है इसके अंदर, तो thermometer को रखने में, lid को लगाने में वक्त लगेगा, और वो वक्त जब लगता है तो हीट लॉस ऑटोमेटिकली तब तक हो गया होता है. ओके. सो इस वजह से वो ऑलरेडी इसमें इतने एरर्स हैं इस मेथड के अंदर, एटलीस्ट व्हेन यू आर डूइंग इट इन ए लेवल्स के स्टूडेंट की लैब, के एग्जामिनर को पता है कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी एरर्स हैं, तो ज्यादा वो वेरिएशन इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाता. सेकेंड कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट दैट वी यूजुअली हैव इज व्हेन यू हैव reaction and you measure the heat content indirectly. So indirect measurement. इसमें हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, हम रिएक्शन के अंदर से थर्मोमीटर की रीडिंग ले रहे हैं. ठीक है. रिएक्शन के हीट कंटेंट की. यहां पे हम इनडायरेक्ट मेजर करते हैं. इनडायरेक्ट मेजरमेंट का यूजुअली रिएक्शन तब होता है जब आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है. In that situation we use it, and it is difficult to measure that change in heat or temperature change directly. It is difficult. So here we use law of conservation of energy. हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि देखें, let's suppose I'll take an example. I want to figure out delta H combustion standard conditions of ethanol. A problem is I burn ethanol, it produces carbon dioxide and water. Carbon dioxide and steam, both of them are gases, they go away. And that steam can cling to my thermometer and condense on top of it, और thermometer की reading को damage कर सकती है. या thermometer itself damage हो सकता है उस flame की वजह से. मेरे पास directly measure करने का बड़ा ही मुश्किल ये तरीका है. I can't. So what we do is we will use law of conservation of energy. We say that
heat given by the reaction ethanol is same as the heat absorbed by water. तो हम क्या करेंगे कि हम water को heat करेंगे and we will measure कि water कितना उसका temperature rise या fall किया, और जितना उसका टेम्परेचर राइज या फॉल किया होगा हम कहेंगे कि उतनी ही एनर्जी एथेनॉल ने प्रोवाइड की है, और हमें इससे पता चल जाएगा. सो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट. सो इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक अ बीकर and in that beaker we have a lot of water. This beaker or a container which has low heat capacity, we try to make a low heat capacity wala, क्योंकि high heat capacity होगी तो बहुत सा heat will be absorbed by the container itself. We don't do that. We use something with low heat capacity. And now we burn it. So for example, यहाँ पे मेरे पास ये मैंने इसे burn किया, ठीक है, ये ethanol है. I burn it. This is water. This is heating. And now I can easily immerse the thermometer here. Make sure that you do not use a lid here. Can anybody tell me why using a lid is not a good idea? So what was the question? My question is, why is using a lid a bad idea in this reaction? Sir, excessive heat produce हो रही है तो शायद solution है बाहर आ रहा है. Solution नहीं बाहर आ रहा, या जो but water is evaporating and you don't want to block that, because if you block that then steam की power की वजह से वो lid भी तोड़ेगा और वो explode भी करेगा, ठीक है. So we don't use a lid, so no lid, ठीक है. सर तो जो हम लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं जो मैस रिलेटेड होता है जिसमें डिश के अंदर लिड भी होती है, तो जब हम लिड नहीं यूज करते तो उसकी यही वजह होती है क्योंकि उसने तो हाँ, यूजुअली यही होता है. यस. Secondly, the idea here is that heat given off by reaction is equal to heat absorbed by water. So for that, you take mass of water in calculation of water. तो आप जब mc delta t करते हो, तो this time you're calculating the heat absorbed by water. So ये mass of water होता है और delta t भी water का ही लेते हैं. इसमें एक error कहाँ से आता है? एक तो of course delta t का error तो inherent है, but there's another problem here. Some water evaporates. So mass doesn't remain constant. So during the reaction, कुछ water evaporate भी करता है. This is actually a good idea if you are trying to measure the heat capacity of water. So अगर आपको for example किसी reaction में ये measure करना है ना, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप डेल्टा m, डेल्टा t और q separately measure करके कर लो. लेकिन अगर आपको heat generated by ethanol measure करनी है, so this is a source of error, क्योंकि आप assume कर रहे हो कि this heat is the same as the heat given by ethanol. But शुरू में ज़्यादा water था और बाद में कम water है, तो डेल्टा t उसके लिहाज से change हो रहा है. तो आपकी overall energy absorbed by water is not the same throughout. So it can like introduce some errors in your calculations. But वो errors usually इतने कम होते हैं कि A levels में हम इतना सोचते नहीं उनके बारे में. All right. So these are the two different kinds of calorimetry experiments that we have. और उसके बाद जब हमें ये एनर्जी ऑफ वाटर मिल जाती है, मेजरमेंट वो आपसे ये करवाता है, मेजरमेंट वो इसकी कराता है, ये वैल्यू वो आपको देता है. उसके बाद वो आपसे ये क्यू ऑफ वाटर कैलकुलेट कराता है, फिर वो क्यू ऑफ एथेनॉल मेजर करवाता है या जो भी आपका फ्यूल था, और फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा इतना मैस ऑफ फ्यूल यूज हुआ है, बताएं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है. तो बड़ा सिंपल है, मैस ऑफ यूजुअली mass of reactant and MR is used to calculate moles
And then we do Q absorbed by water over moles of reactant to find delta H that we have. और Q of water क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि energy absorbed by water is the same as energy released by the reactant. So the key point in these questions is कि mass भी water का, delta T भी water का, लेकिन moles reactant के. So of course you can always talk about how realistic or how valid the assumptions are, but the reality is that these are two pretty useful, easy to do react methods to figure out calorimetry. Sir, could you please explain this again? Which part? The moles wala and like the different things, I guess. Yeah, so for example, I do a reaction which I want to figure out what is the enthalpy change or of combustion of ethanol. So I burn ethanol. I say, okay, when I started burning, I had 25 grams of ethanol. When I stopped burning, I had 23.5. So I know that mass of ethanol that burned was 1.5 grams. If I know 1.5 grams and I know that this is ethanol, I can easily figure out how many moles of ethanol I burned, right? So delta H is joules per moles. Delta H is some kilojoules per mole of ethanol. So I find the moles of ethanol through my calculation of mass and MR. But kilojoules, I don't have a direct way of measuring it. So I measure the energy absorbed by water through this method. And my assumption is that heat given off by ethanol is the same as heat absorbed by water. I'm assuming 0% heat loss. I'm assuming all the water energy absorbed by water is what I've calculated here. So the energy absorbed by water is the same as the kilojoule given by ethanol. And moles of ethanol I can easily calculate, and based on that I can find out the delta H combustion of ethanol. Is that clear? Sir, so basically heat given by ethanol is equal to heat absorbed by water. Yes. So एक क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा. I have 0.16 gram methanol, which is CH3OH, is burnt to heat 50 gram water from 19 degrees Celsius to 23 degrees Celsius. Find delta HC of methanol. So मुझे उसका क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एच सी. इसका मतलब है मुझे ये कैलकुलेट करना है ना. बिगिन विद एंड इन माइंड. सोचें आपने कैलकुलेट क्या करना है. आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा एच सी, विच इज एनर्जी गिवन बाय मेथनॉल divided by moles of methanol. Energy given by methanol is the energy absorbed by water. Moles of methanol is mass over MR of methanol. Energy absorbed by water is MC delta T. But this time, this is mass delta T, everything of water. And mass over MR is of methanol. अगर किसी को ये क्लियर है कि मैं कैसे ये कैलकुलेट कर सकता हूं, आपको ये कैलोरीमेट्री आती है, आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में. The key point where students get confused is कि ये mass water का क्यों है और ये mass methanol का क्यों है. Obviously, examiner कभी भी आपको directly ये calculate करने का नहीं कहता, वो step by step करवाता है आपसे. So let's take it step by step. I want to figure out energy absorbed by water. For that, I need mass. So mass of water is 50 grams. I need delta T. Delta T is 23 minus 19, that is 4 degrees Celsius, or it can also be 4 Kelvin, कोई फर्क नहीं पड़ता. I need my specific heat capacity of water. I'm assuming it to be 4.2 joules per gram per Kelvin. Okay, just for simplicity. So energy absorbed by water. Yes. Sir, do you not add 273 to change it into Kelvin though?
Do I need to do that? Think about it. All I need is to know the change in temperature, which means whether it's a change in Kelvin or whether it's a change in degrees Celsius, they're both the same, right? That's why I don't need to add it. I can, won't make a difference to my answers. So energy absorbed by water is mc delta T mcat. M is 50, C is 4.2, delta T is 4. The key point where students lose marks is कि वो M की जगह पे मेथनॉल का mass लिख देंगे. But बात simple सी है. Energy water ने ली, temperature change water का आया, del C water का था, mass है तो मेथनॉल का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. So we do this. I get some value here. Can anybody calculate, please? 840 joules. So basically 840 joules is absorbed by water. Okay. How many moles of methanol I have? Mole is mass over mr. For methanol, mr is 12 plus 3 plus 16 plus 1, 32. Are you all with me here? किसी को कोई confusion है तो पूछ लीजिए. So I have 5 into 10 power minus 3 moles of methanol. Heat absorbed by water that was given off by methanol. So I'm going to assume that heat absorbed by water is the same as heat given off by methanol. And of course, you can challenge my assumption here. You can be like, if heat loss भी तो हुआ है, water pure नहीं था, methanol pure नहीं था, methanol में ethanol mix हुआ था. हजार तरीके हैं, हजार reasons हैं कि हम कह सकते हैं कि this assumption is not challenged, not valid. And that is all correct. You will be right if you say that. But over here, we don't have any other way. So we have to make this assumption, and we can always talk about how reliable this assumption is. So heat given off is 840. Moles is 5 into 10 power minus 3. So the delta HC of combustion is going to be 840 divided by 168 kilojoules per mole. There you go. Is that clear? Yes, sir. Perfect. So that is what we use. By the way, the actual value is way off. The actual value that we have, I think, was 700 करके कुछ होती है. But क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास जो डेटा उससे तो हमने यही निकाली है ना. ठीक है? अच्छा. Is this correct, by the way? The way I've solved this question. Is this symbol, sorry, is it right to use this symbol in this situation? Read the question and then tell me. क्या मैं delta HC standard बोल सकता हूँ इसको? No, sir. Why not? Because it's starting from 19 degrees, it's supposed to be Exactly. 25. Very good. Second, sources of error identify करते हैं. This guy heated a very small change. 4 degree Celsius का उसने difference लिया है. हो सकता है कि 4.3 का हो. उसकी प्रिसीजन एक तो बड़ी फजूल है, 19 और 23. एक डेसिमल प्लेस तक भी उसकी प्रिसीजन नहीं है. ठीक है, हो सकता है ये 18.5 हो और ये 23.4 हो. हमारे पास उसकी प्रिसीजन बहुत खराब है, उसका थर्मोमीटर ज्यादा डिटेल नहीं है. दूसरा, डिफरेंस बहुत छोटा है, जिसका मतलब है कि परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा होगा. तीसरा, बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ फ्यूल उसने बर्न किया है. इतनी थोड़ी अमाउंट पे एरर बहुत ज्यादा होगा. सो इफ यू आर एक्चुअली डूइंग दिस, मेक श्योर कि आप 0.16 की बजाय थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लें ताकि आपकी जो मेजरमेंट एरर है वो कम हो. सोचिए ना, 0.16 ग्राम, इतना तो वैसे ही उसने गिरा दिया होगा उसमें से 0.012 जब वो ट्रांसफर कर रहा होगा उसका एथेनॉल को बर्न करते हुए. ठीक है, हो सकता है उसकी वैल्यू इतनी रिलायबल ना हो. दूसरा, ये वैल्यू ठीक है, 50 ग्राम वाटर इज अ रीजनेबल अमाउंट टू हीट अप एंड दैट इज गुड. But I would still want to heat to a larger degree. Maybe 20 degree Celsius का difference calculate करता, ज़्यादा value मेरे करता, ताकि MR को देख के moles अच्छी आती value और moles के अलावा Q of water की अच्छी value आती, ताकि मेरे पास overall percentage error कम आता. So by reading these, you can clearly see कि क्या है, and it is important कि आप अभी से इस तरह से सोचना शुरू करें. अगले साल आपने पेपर 5 देना है, या some of you are going to do it this year. So पेपर 5 में इस तरह की important points आपसे पिक करवाता है. They expect you to be able to identify कि ये value unreasonable है 0.16, ये difference बहुत छोटा है. So ये चीजें आपको, ये assumption बहुत challenge कर सकते हो आप इस assumption को कि Q of water is Q of methanol.
बट इन पेपर 3 वो इतना ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता, वो ज्यादा आपसे 1 या 2 मार्क का पूछ लेता है कि बताएं जी ये क्यों गलत है। सो वो आप इस तरह से बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। यू कैन गिव अ कमेंट कि जी एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, टेम्परेचर increase is not a large value, the amount of fuel burnt is very small, इस तरह के आप different उसको comments दे सकते हैं। All right, so thank you so much.